Can you pronounce this or this or this or this? नहीं, even I can't. But आज के वीडियो में जो प्रोनाउंस कर पाएगा उसी को खाने को मिलेगा. So basically आज के चैलेंज में we are only going to be able to eat that dish जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं. अगर हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, that means we're gonna have to skip the meal. That's right. Without further ado, पेट पूजा शुरू. जिसको अंग्रेजी आती है वही जीतेगा गुरु. For breakfast we are going to Halls. It is house. I think it's Halls. House. Let's go. पूछ के आता हूँ. Guys, this is a Turkish restaurant. यहाँ पे Burmese dishes है along with continental and Mediterranean. भैया इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? हाउस ना. एक डिश मैं वैष्णवी के लिए ढूंढती हूँ which she can eat if she pronounces it right. Guys, ये pretty simple है but I'm starting with a simple one क्योंकि इसको भूख लग रही है, इसको कुछ खाने को भी मिल जाएगा. Can you pronounce this? Isn't this too simple? Shakshuka. 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 Let's check it. Shakshuka. Shakshuka. Shakshuka ही बोला मैंने. No. But ठीक है ना. Shakshuka. Shakshuka. सही है guys. I think I get to eat this. अबे 19-20 का ही तो फर्क है. Guys, दीदी का देखते हैं अब क्या वो प्रोनाउंस कर पाती है कि नहीं. तेरा हम काउंट कर रहे हैं वैसे. हाँ. I don't think so करना चाहिए. क्यों भाई? तूने सही तो बोला मैंने. शक्षुका बोला है, शक्षुका नहीं बोला, शाक्षुका बोला है. तो अगर मेरा भी 19-20 का फर्क हुआ तो मेरा फिर काउंट होगा. ये है तेरा. This is Marsemekli Mualla. Marsemekli Mualla. Let's check guys. Mualla. मुआला तो ठीक है. Mercimek. क्या लिखा है? माजमेक. Mercimek. माजमेकी. यार बहुत डिफिकल्ट था. एटलीस्ट मुझे मुआला तो मिलना चाहिए. You don't get it. एक और दे दे. चल ठीक है. एक कोई और. इजी वाला दे. ये पहला वाला. कसेरोपिटा. कसेरोपिटा. Caseropita. कैसेरोपिटा. यस. कैसेरोपिटा. ये कैसेरोपिटा जो है ये वेज में ही है. उन्होंने बोला कि चिकन जो हमने लिखा है मेन्यू में वो गलती से लिखा है, सो दिस इज प्योर वेज. आई एम गोना शो यू ये कैसा है. इट लुक्स ऑफुल लॉट लाइक समोसा है. चलो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है. इट्स ओजिंग विद चीज एंड दे हैव अ लॉट ऑफ वेजीज इन दिस. अब मैं इस चटनी के साथ खा के देखूंगी. इट्स लाइक चीजी पिज्जा पॉकेट्स जो होता है ना वैसा ही बिल्कुल लग रहा है. चटनी थोड़ी सी खट्टी है. लेट्स ट्राई विद दिस डिप. दिस वन इज मच बेटर बट आई एम गोना रेट दिस अ सॉलिड 4 on 5. 5 पीसेस मिले हैं एंड द डिश कॉस्ट मी 625. 100 रुपए का एक पीस है. आई बेटर फिनिश दिस. Math is taking a hit today guys. यार एक दिन में एक ही चीज हो पाएगी, या तो करेक्ट मैथ्स या तो करेक्ट इंग्लिश. This is shakshuka. मुझे पता नहीं था गाइस कि पूरी रोटी सब्जी आ जाएगी because हम तो इसको रोटी सब्जी बोलते हैं. हम इसको ना शक बोलते हैं ना चुका बोलते हैं. ये क्या चीज है इसको मैं आपको गूगल करके बताती हूँ because I have no idea. Guys, this is kesra bread because shakshuka is basically poached eggs in tomato sauce curry. तो ये basically एक ग्रेवी टाइप आप मान लो काइंड ऑफ. एंड दिस इसके साथ इसलिए उन्होंने ये ब्रेड दिया हुआ है so that I can enjoy my meal properly. Let's tear into our kesra bread. Oh my god, पहले मुझे लगा था ये चीज है but no, it's poached egg. It's a protein rich dish guys. Breakfast में protein intake मेरा एकदम अचीव हो गया है. It's very good. The kesra bread is very soft. It's not really like naan जो मुझे पहले लगा था कि नान जैसा होगा. To be very honest with you, I'm not really a fan of poached eggs. In my opinion, that's like a 3 on 5 for me. बाकी आप ट्राई करके देखिए. ब्रेकफास्ट में धूप में बैठने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम बहुत बेवकूफ है. So we have decided कि अब हम AC में बैठ के खाएंगे guys. And the next stop is Vietnam. Nope, it's Vietnam. That's how you pronounce it. Vietnam. चलेंगे भैया guys. हम क्या करें? I am in love with Vietnamese food, especially the dumplings. So let's see if there is anything that I can give Vaishnavi to pronounce. I'm pretty sure ये नहीं कर पाएगी. Okay, pronounce this. Mushrooms and a crusty baguette with pickled veggies and a savory twist. That sounds like something I may or may not want to have, you know. So my guess is it's ba mi nam. Nam ba mi. Let's try this out, guys. Banh mi. Banh mi. Me. Banh It's mi. easy. I said nam ba mi. एक और try करती हूँ. नहीं. Okay, I'm gonna see if she remembers how to pronounce this. ये मुझे आता है. ये हमने एक वीडियो में किया हुआ था पहले. देखो याद है? It's not pho, it's pho. Pho with vegetables and I'm gonna show it to you. Pho. इससे ये प्रूव हो जाता है गाइस कि मेरी अंग्रेजी वैष्णवी से कई गुना ज्यादा बेटर है. So I'm just gonna go with homemade pho. मैंने इनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया था कि मुझे ब्रॉथ बहुत स्पाइसी चाहिए. Let's see if my instructions have worked or not. Oh my god, it's so good. It's the best broth I've ever had. It's not too salty. It's not too spicy as well. It has a very rich flavor of black pepper and nimbu, and it has so many vegetables. You name it and it's there. Tofu se leke broccoli, carrot, capsicum, zucchini, and I've gone with the rice noodles. आप इसको wheat noodles से भी replace कर सकते हो, but rice noodles is the way to go. I'm gonna rate this a 5 on 5.
Okay, bro, I want you to pronounce the third dish from the pasta station. मुझे पता है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. Cheesy Parmesan Alfredo, isn't it? Let's find out. Italian name is Parmigiano. That has been transformed into French. In French, we would say Parmesan. And from Parmesan. French, it has been adopted in the English language and also in American. In English or American, it is pronounced Parmesan. तूने पामेशान बोला ना, गलत हो गया ना. पर मुझे पास्ता खाने थे यार. तू रुक बेटा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. You have to pronounce this. This is easy. This is so easy. Did you actually think I won't get bocconcini right? It's stir-fried broccoli and bocconcini. Bocconcini. It's not bocconcini, it's bocconcini. No, it's bocconcini. It's bocconcini, guys. ये कैसे हो गया? Bocconcini. I said bocconcini. It's bocconcini. Do I get it? Please give it to me. मैं एक और मील नहीं skip करना चाहती. Guys, it's bocconcini. ले लूँ मैं? मेरी बहन है guys, मुझे भूखा नहीं मारेगी. Because you were nice to me, I'm gonna be nice to you, and I'm giving you one more chance to redeem yourself with a drink. Can you pronounce the fifth dish? Amur dal caro. Amur da caro. Let's see guys. Caro तो सही है. अमूर और दाल का देखते हैं. Amur. Dal. So I was right. Amur dal caro. Okay, it is a watermelon combination of green apple, peach and lime. I am sorted. वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी मुझे क्योंकि मैंने वो सूप पिया था pho with vegetables. This is way too much. But guys, I love every drink that has a watermelon taste to it. And watermelon का ही season है. So I am in love with this anyway. Amazing. It has that punchy orange वाला flavor also. I think it's because of the green apple and the lime. तो इसमें zesty सा punch है along with sweetness of watermelon and थोड़ा सा खटास of the lime. Overall, I'm gonna rate this drink a solid 4.5 on 5. Guys, our stir-fried broccoli and bocconcini is here. भैया ने मुझे बोला था कि ये तो मैम ग्रेवी में आता है, कुछ तो ले लो, नूडल ले लो, इसके साथ राइस ले लो, कुछ ले लो. But I was like, नहीं भैया इसको ड्राई बनाओ, मेरे को अभी राइस वाइस खाने की इच्छा नहीं है. And this is what I've got. I've got a lot of veggies in here and cheese. And we're gonna take a broccoli and mushroom bite. I love it. It's so good. Guys, this is so good. I love the masala. It has a lot of Indo-Chinese flavors. एकदम मांचा सूप में कैसे flavor होता है वैसा flavor आ रहा है सब्जियों में से. The सब्जियां are perfectly cooked. They're slightly crispy but they're tender from the inside. And there's like a little hint of gravy also. And the cheese is taking this to next level. I love this dish. I'm gonna give this a 5 on 5. Guys, time हो गया है dinner का. We are going to Folks. And I am going to find ऐसी डिश कि वो फिर से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगी. I have one word for her जो I'm pretty sure कि इसने देखा हुआ है पहले, हमने काफी खाया भी हुआ है. But I want to see if she can pronounce it right. Guys, you know how do you pronounce this? बहुत easy है ये. It is penne al fungi. No, fungi नहीं होता. Fungi नहीं होता, fungi होता. Sure है तू? Penne al fungi. हाँ. Guys, I've got the best revenge ever. This is the dish she's gonna have to pronounce. Arborio sauce, cheese and jalapeno balls, crumb. ये खाया हुआ है, ये मुंबई में खाया हुआ है. I think this is called arancini. चीनी कैसे हो सकती है? Arancini, Italian. Arancini. आगे बता. Arancini. 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 Italian है guys. It is arancini and I get to eat it. I've got 6 arancini balls here. And guys, arancini balls में rice and cheese होता है and they are tossed in Italian marinara sauce. Guys, the balls are so crispy from the outside and अंदर की filling इतनी ज़्यादा tasty है. I just love the arrabbiata / marinara sauce that they have tossed these balls arancini in. This is exactly what one of the guys I went on a date with lacked. I've talked about it on my channel, so you know, go watch. Oh my god, I can't believe I'm ending my day with my favorite kind of pasta. I love penne pasta in white sauce. I don't think the camera is doing enough justice to how much appetizing it's looking in person. It's amazing. Fungi है इसे mushroom का taste बहुत overpowering है. मगर I love mushrooms. I'm a mushroom girl. So I'm gonna rate this a 5 on 5. And on that sweet note, we are gonna see you in the next video. If you haven't liked this, like it. If you haven't shared this, why? And if you haven't subscribed, I think you've subscribed already, right? नहीं दिख रहा है लाल button? Go ahead and smash it. Smash. Right now. We'll see you in the next one.